तक फैले हुए हैं। गोवा से लेकर गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए देश है। बहुत बड़ा देश है और एक दूसरे को जानना चाहिए। हर प्रांत को जानना बहुत जरूरी है, तब हम देश को और मजबूत कर सकेंगे। भाषा के कारण से, क्षेत्र के कारण से, चेहरा के कारण से हम दूर न रहें। हम हिंदुस्तानी के नाता से हम एक रहें, तब हमारा देश का अस्मिता और मजबूत होगा। जो ये अस्मिता पुरस्कार से पुरस्कृत होकर मैं यहां से जा रहा हूं और ज्यादा देश के लिए काम करने का मैं संकल्प करके जाता हूं यहां से। और सिक्किम की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामना और नए साल के हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए अपना दो टूक शब्द यहीं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चामलिंग जी। पुणे के लोग सिक्किम पहुंचेंगे, जरूर सिक्किम पहुंचेंगे। पुणे के लोग ही नहीं, हम दिल्ली वाले और मुंबई वाले, हम सब भी सिक्किम पहुंचेंगे। चामलिंग साहब बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अन्य राज्य सिक्किम से प्रेरणा लेंगे और अपने राज्यों में भी वही सब उपलब्धियां हासिल करेंगे जो आपने अपने राज्य में हासिल किए हैं। और अब फोटो के लिए हम सभी आप सभी अपना अपना स्थान लें। फोटो के लिए हम गुजारिश करेंगे आप सभी अवॉर्डीज से, एक फोटो के लिए हम लोग यहाँ सामने मंच पर आ जाएं। हमारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान भी और अध्यक्ष महोदय भी। एक ऐसी फोटो जो हमारे साथ आगे जाएगी और हमेशा हमारी यादों को ताज़ा रखेगी। भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 के अवॉर्डीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। हम उनका यहाँ अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं आज तहे दिल से। भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हमारे अवॉर्डीज इस समय आपके सामने मंच पर मौजूद हैं। 2012 के अस्मिता पुरस्कार। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम निवेदन करेंगे जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक, हम जानते हैं जिन्होंने भारत में सुपर कंप्यूटर्स का आगाज किया है। भारत में कंप्यूटर क्रांति के जो नायक और प्रणेता रहे हैं। हम अब गुजारिश कर रहे हैं डॉक्टर विजय भाटकर जी वो आएं, हमें संबोधित करें और धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर विजय भाटकर जी। My dear young friends, distinguished invitees, just few end words, few concluding words. Once again we have assembled now for the 8th time to celebrate the spirit of India, the Asmita of Bharat. The spirit which was very vividly expressed by our Chief Minister, Sri Pawan Kumar Chamling. And that was a very beautiful expression of the spirit of India, my dear friends. A few months back, when we assembled to select the stars of India, the awardees, and we thought, as I was driving, that this task is very difficult. There are so many stars.
But then, when we entered Professor Vishwanath Karat's that magnificent office, and thereafter into meeting room, Rahul was there, and the magic of our chairman, Dr. Mashalkar, once again worked. I thought that we are looking like a galaxy with billions of stars, millions of stars, and how to pick up those stars. And let me tell you that our job was over within 35 minutes, and we were out. When we look at Dr. Mashalkar or Professor Karad, we look at each one of 1.22 billion people of India as a star. They have that potential. But some stars burn with great energy. They illuminate others, illumine others. And we have to choose stars from not all disciplines, but some chosen disciplines, what we thought in the beginning, what Rahul thought in the beginning, with these Bharat Asmita Awards. Friends, we have those people who have been honored just in front of you, who will guide us, who are our icons, who will be the beacons of, as he said, for shaping the destiny of India, for shaping Bharat Asmita. And let me tell you that Bharat Asmita is also Vishwa Asmita, because we don't stand as a nation. For us, the entire world is our home, as enunciated by Saint Naneshwar. We have honored Professor Parasuraman, the director of one of our finest social sciences institute, when his name cropped up, and there was immediate agreement that we are celebrating Professor Parasuraman, and we are celebrating that institute, as he said. India's, as we said, the progress from independence, as our Prime Minister said, will be shaped by science and technology. And every year we honor Vigyan and Tantragyan Shreshta. And when, of course, Dr. Mashalkar suggested none other than Dr. Brahmachari, Samir Brahmachari, Professor Brahmachari, who is leading now a largest chain of laboratories, of CSI laboratories, he should receive this award, and there was immediate agreement, and we are celebrating Professor Samir Brahmachari. India, as Siddhartha Basu said, I saw that this country with no media at all, 1 or 2 channels of Doordarshan and All India Radio, today has the largest network of television and not radio channels, but some radio channels, but largest network, reaching 50 million homes. And now with 4G, it may be a little delayed because of 2G problems as it cropped up today, but 4G, we'll have almost 1 billion hands watching television and other channels, media. Very, very powerful. Siddharth represents that change, really, that how this medium can be effectively used, not only for entertainment, fun and frolic, of course, we are all like that, but also for education. And that education was reflected in, of course, the imaginative creation of Kaun Banega Crorepati. That talent can be seen in every part of India and can be celebrated. That's what I think we are celebrating. Siddhartha Basu, Nana Patekar, inimitable, is not here, so the award will be handed over to him. And of course, these awards were originally constituted, first were constituted for celebrating, or parliamentary democracy, the largest democracy of the world. And we want that how this parliamentary democracy can bring really great development for our country, and which is a problem, as we see. Who are those young people who will transform our parliamentary democracy, will practice their democracy? And we said we must choose, our hope is in young people. So we are celebrating Janapratinidhi Shrestha Award, and it rightly goes to what Rahul suggested, one of the most outstanding, young, promising person, Jayant Chaudhary. And I think, remarkable to see you here along with your wife. Wonderful. Of course, the last speech, which came from last award, like the Jeevan Gaurav Puraskar Award, the life and times
of a great leader we celebrate in this award. And we have with us Sri Pawan Kumar Chamling with his life partner. And what a remarkable thing which is said. I think we want really leaders of this, and we are proud that Bharat Asmita Awards are going to such great leaders. Friends, Bharat Asmita Award, I think that really living up to their expectation, what Rahul has imaginated some time back, under the leadership of Dr. Raghunath Mashilkar, Professor Vishwanath Karad, and other members of the awards committee. Today, other than this, is a very special day. Indeed, it is a very special day. Today, as was told to us, and we know all, some of us, is the birthday of the founder, the preceptor of this great institution, who had this idea, who powered this idea, and many ideas, Professor Vishwanath Karad. I just remember a few words, Professor Vishwanath Karad. I know a whole book will not be enough to describe you, to salute you, really. Much has been written, but I would say that starting from a 29 years back, almost 30 years back, small sapling was sown by you in your mind, in a small room. And today, after 29 years, it has become a mammoth banyan tree, what is called Bodhi tree, the tree of education, where with 63 institutions and over 60,000 students from KG to PG, many disciplines, medicine, engineering, pharmacy, all branches of engineering, commerce, arts, sciences, all disciplines. To me, it looks like, and I often said this, it is not just a cluster of institution or group of institution. It is the next generation university that we want to see in India, which will shape the 21st century. It is not that it is here the most valued education is given, but also value-based education is given, which people thought cannot be combined together. Professor Karad went on in the dark clouds of whether we will survive the 21st century, and he remembered and he invoked the words of Swami Vivekananda that if the world has to survive, only it can do through the synthesis of science and spirituality, science and religion. With that inspiration, and the inspiration coming from the highest knowledge enunciated by Saint Naneshwara and Jagadguru Tukaram Maharaj and the saints of India and saints of the world, I think the World Peace Center was founded. And the stellar accomplishment was that we had the first time a parliament of science, religion and philosophy, which was attended by many scientists, religious leaders, cultural leaders, many students and professors and teachers. We set a new direction, and this direction continues. So I think the distinctive part of this institution is this synthesis, as we also see in Bharat Asmita Awards and other awards instituted by Professor Vishwanath Karad. Finally, I would say that Professor Vishwanath Karad has entered the 7th decade of his life, 71 years. But this decade is going to be all that accomplishment we have seen, tremendous. But the best is yet to come, that we will see in this decade. Professor Vishwanath Karad, we wish to honor you on behalf of all of us here. We wish to honor you on this day. We request you to come forward. We request you to come forward, and I request bring, I think, the shawl and the bouquet and whatever thing like that kind of thing. And also there is a special honor I would like to mention. Some time back I had founded a university called India International Multiversity with the same purpose like synthesis of science and spirituality for the service of humanity. And I thought that this university should award fellowships for the distinctive contributions. And the first, of course, the function will be held. The first distinctive fellow of distinction will be awarded to him this year. Huh? Yeah, and we are of course not giving shawl to him. Wherever we go, we will travel. Professor Karad carries a kambal of this one which the shepherd carries, and he said that symbolizes what I have to do for the people of India.
So this is a very special recognition, friends. So we are now honoring Professor Vishwanath Karad on behalf of all of us here. तालियों की गड़गड़ाहट की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर विश्वनाथ कराड के जन्म दिवस पर हम सभी उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और अब हम लोकार्पण करेंगे डॉक्टर विश्वनाथ कराड साहब द्वारा लिखित पुस्तक इथे साकारले प्रसायदान, जो कि एक ऑडियो विजुअल पुस्तक है। बंधुओं, पहली बार इस तरह की पुस्तक आप देख रहे हैं और इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर माशेलकर जी से, डॉक्टर विजय भटकर जी से। और ये आईपैड पर ये पुस्तक है जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये ऑडियो विजुअल पुस्तक है जिसके रचयिता डॉक्टर विश्वनाथ कराड साहब हैं। और मिलिंद पांडे से भी मैं अनुरोध करूंगी कि बुक के बारे में वो 2 शब्द कहें और बताएं कि ये पुस्तक क्या है। Friends, this is a very special book called Ithe Sakarale Pasaidan. The book is first time is available on iPad, not only in the form of text, but in the form of audio and video. Since this book is in Marathi, let me put my words in Marathi, what it all about. मित्रांनो, आजच्या या पावन पवित्र दिनी आणि विश्वनाथ कराड सरांच्या वाढदिवसानिमित्त काही सुमन अर्पण करण्याचा एक अल्पसा प्रयत्न आहे। गेल्या 20 वर्षापासून श्री क्षेत्र आळंदी व देहू येथे विकासाचे अविरत कार्य सुरू आहे। इंद्रायणी नदीवरील वारकऱ्यांच्या सुविधेसाठी घाटांचे बांधकाम, प्रदक्षिणा मार्ग, देहूचे महाद्वार इत्यादी बरोबरच आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर तुकाराम ज्ञानतीर्थ विश्वरूप दर्शन मंच व संपूर्ण वारकऱ्यांच्या तुमच्या माझ्या MIT मनामध्ये सुवर्ण अक्षरांनी कोरल्या गेलेला प्रसंग म्हणजे सुवर्णजडित गरुड स्तंभाची स्थापना। मित्रांनो, हा सगळा प्रवास ज्या ग्रंथात वर्णन केला आहे त्या ग्रंथाचं नाव आहे इथे साकारले पसायदान। कराड सरांची संकल्पना, निर्मिती व त्याच्यामध्ये असलेले अतिशय उत्कृष्ट लेख। सरांचं हे विश्वात्मक कार्य अखिल विश्वासमोर येण्याकरिता, आळंदी देहूचे कार्य जागतिक स्तरावर मान्य होण्याकरिता अनेक विचारवंत आळंदीला येऊन गेलेत। त्यामध्ये नोबेल पारितोषिक विजेते आलेत, युनेस्कोचे प्रमुख आलेत, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, विविध नेते आलेत। संत शिरोमणी ज्ञानेश्वर माऊलींची तत्वज्ञ म्हणून जगाला ओळख व्हावी व श्री क्षेत्र आळंदी जगाच्या नकाशावर डिव्हाइन नॉलेज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड म्हणून ओळखल्या जावं ही सरांची इच्छा व या इच्छेला मूर्त स्वरूप देण्याकरिता इंटरनेटच्या माध्यमातून, आयपॅडच्या माध्यमातून आज हे कार्य जगासमोर ठेवण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे। इथे साकारले पसायदान हा ग्रंथ आळंदीच्या विश्वरूप दर्शन मंचावर प्रकाशित झाला। ती हार्ड कॉपी होती। या ग्रंथाचं प्रकाशन म्हणजे एक ऐतिहासिक घटना होती। या ग्रंथाचा लोकार्पण सोहळा ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते व महान संस्कृत पंडित पद्मश्री माननीय डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री व ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते पद्मभूषण माननीय डॉक्टर UR अनंतमूर्ती यांच्या हस्ते झाला। हा संपूर्ण ग्रंथ आज रोजी इंटरनेटवर, आयपॅडवर प्रकाशित होत आहे व याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा नुसताच इंटरनेटवर वाचण्याचा ग्रंथ नसून हा एक ऑडिओ व्हिडिओ फॉर्म असलेलं पुस्तक आहे, एक इंटरॅक्टिव्ह बुक आहे। या कार्यामागचे विचार आणि विश्वात्मक देवाला माऊलींनी मागितलेलं मागणं आळंदीच्या घाटावर, इंद्रायणीच्या काठावर कसं साकार झालं याचा संपूर्ण व्हिडिओ, अपनी जुबानी देत असलेलं कराड सरांचे विचार हे सुद्धा व्हिडिओ रूपाने या पुस्तकात आहेत। हा ग्रंथ आपण मोबाईलवर, आयपॅडवर किंवा कॉम्प्युटरवर वाचू शकता, ऐकू शकता, पाहू शकता, अनुभवू शकता आणि हे सर्व फक्त एका क्लिकवर। www.bookganga.com या वेबसाईटवरून आज या ग्रंथाचे विमोचन होते आहे।
आजच्या दिवशी हा ग्रंथ अमेरिका, कॅनडा, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, इंग्लंड जगाच्या विविध कानाकोपऱ्यात जिथे जिथे मराठी बांधव आहेत, जागतिक मराठी परिषदा जिथे होत आहेत, जागतिक मराठी संमेलनं जिथे होत आहेत, त्या सगळ्या ठिकाणी हा ग्रंथ पोचणार आहे. ज्या कंपनीच्या माध्यमातून हा ग्रंथ जागतिक स्तरावर जातो आहे त्या कंपनीचे नाव myvishwa.com असे आहे. USA मधील फिलाडेल्फिया इथे कंपनीचे मुख्य ऑफिस आहे, ऑस्ट्रेलिया इथे उपकार्यालय, तर पुणे इथे डेव्हलपमेंट सेंटर आहे. या कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी श्री धनंजय दातार या ठिकाणी आले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आयपॅड घेऊन या ठिकाणी यावं व एक आयपॅड माशेलकर सरांच्या हातात, एक आयपॅड भटकर सरांच्या हातात द्यावं. मित्रांनो, ज्या शिकागोमध्ये धर्मसभेत स्वामी विवेकानंदांनी ऐतिहासिक भाषण केलं होतं, त्या शिकागोमध्ये श्री कराड सरांना बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या 25व्या म्हणजे सुवर्ण महोत्सवाप्रित्यर्थ चीफ गेस्ट म्हणून विशेष निमंत्रण होतं. विवेकानंदांच्या त्या भाषणाप्रमाणे सरांचं हे भाषण पण खूप गाजलं आणि त्या ठिकाणीच या पुस्तकाची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली. इथे साकारले पसायदान. Thank you, Milinji. I'm so glad that we are at the end of the program, and let me say thank you everybody, all the student fraternity here from all the disciplines, all the respected people from city of Pune, and most important, all the award winners of today's program. And last but not the least, let me thank the chairman of the Bharat Asmita National Awards Committee, Dr. Raghunath Mashelkar sir. Without his effort, I must tell you, these stalwarts who have come here with only because of Dr. Mashelkar sir's respect and reverence. So let us have a thank you so much, sir, for your motivation, your continuous motivation, and soon we are going to come with very one important moment of My India movement with the blessings of Dr. Mashelkar. Thank you so much. Thank you so much, everybody. धन्यवाद. और अब हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. और इसके साथ ही हमारा आज का ये भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 2012 हम यही संपन्न करते हैं. हमारे सभी अवॉर्डीज को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. नवयुग को जिनसे है आशा, हम उनका सम्मान करें. उनको सम्मानित करके हम खुद का ही सम्मान करें. भारत अस्मिता, 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 भारत अस्मिता. नवयुग को जिनसे है आशा, हम उनका सम्मान करें. उनको सम्मानित करके हम खुद का ही सम्मान करें. भारत अस्मिता, 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 भारत अस्मिता. हेलो चेक. आपकी सूचना के लिए हम बता दें कि आज डॉक्टर विश्वनाथ कराड साहब के जन्म दिवस के मौके पर यहाँ एक कैंपस में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे से चल रहा है और शाम को 7 बजे तक जारी रहेगा. हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि सरस्वती विश्व ए विंग
जो कि चंद्रलोक गार्डन के पास में है, वहां पर आप सभी पहुंचें और ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये एक ऐसा डोनेशन है जिसका कोई सानी नहीं है। रक्तदान से बड़ा कोई दान हो नहीं सकता।